Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the second lecture of this series of Indian Evidence Act, and I am Advocate Gaurav Singh Adana. Now see, the first thing you talk about in the Indian Evidence Act is, since Indian Evidence Act is about proving, Evidence Act is about proving, so what has to be proved? In any civil suit or a criminal proceedings, Evidence Act is about proving. So the first question arises is what you have to prove through the evidences. Little bit we have discussed this in first lecture also. So what has to be proved through evidences? In this, the first one is, out of the two things, the one is, first one is fact in issue, or that is also called primary fact. And another one is relevant facts, which is also called secondary facts, also called circumstantial evidence. So we have to prove the facts, and these facts, one is fact in issue and another is relevant facts, secondary facts or circumstantial evidences. Circumstantial evidences, also called relevant fact, circumstantial evidence भी कहलाते हैं, also called or facta probatia. Relevant fact also called facta probatia. And the fact in issue, that is primary fact, main fact, that is also called facta probandum. So whenever you talk about proving something in the course of trial in any criminal or civil matter, you always have to prove the main fact, and in order to prove the main fact, you also have to prove the relevant facts. The main fact is called the fact in issue, and the other facts which is go on to prove the main fact, they are called the relevant fact or the facta probatia, or they are also called circumstantial evidences or secondary facts. देखिए, जब भी हम एविडेंस के बारे में बात करते हैं, इट इज either सीपीसी और सीआरपीसी, यहाँ पर एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन देयर द एट द स्टेज ऑफ ट्रायल you have to prove certain facts to prove your case, and then facts you have to prove is of two types. One is the main fact you have to prove. For example, we take a that accused causes a murder, a criminal case, accused causes a murder, accused पे allegations है. अब इसमें फर्स्ट मेन फैक्ट आएगा वेदर द एक्यूज्ड एक्चुअली कॉजेज द मर्डर, क्या एक्यूज्ड ने एक्चुअली विक्टिम को मारा है. देन सेकंड वन इज वेदर द एक्यूज्ड इज हैविंग द इंटेंशन और द रेलिवेंट मेंसरिया ऑफ द सेक्शन टू कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम. सो these two are the main facts. So these two are the main facts which are called the fact in issue for this case, this example. So these fact in issue are also called the factum provendum. So single fact is called factum provendum. When more than one fact, it is called facta. Plural will be facta, facta provendum. And you cannot prove intention etc. per se. So there are some other facts which go on to prove this to fact in issues in this example. So by the other facts you can infer the intention or any other similar fact. So those other facts which ultimately go on to prove the fact in issue will be called the relevant fact. Because at the stage of trial, the prosecution has to prove certain facts and defense also has to prove certain facts. Suppose there is a criminal matter and the prosecution alleged that the accused has the intention to cause the death and the accused causes the death of the victim. So these are the two facts: causation of death
And number two, intention to cause death. And suppose the defense take the contention that I have acted in the self-defense. Accused has acted in right of private defense. Then whether the right to private defense exists or not. Now these are the three issues. One is whether the accused caused the death of the victim. Number two, whether there is intention to cause death or the mens rea, whatever that section needs. And number three, whether it was a case of private defense. And the burden of proving of causation of death and intention is lies upon the prosecution. And burden of proving of general exception, that is he caused the death in private defense, is lies upon the defense. But these are the three main facts, and once decided, these three together will result into the final decision of the case. अब ये तीन फैक्ट्स प्रूव कर लो और तीनों फैक्ट्स पर एविडेंस ले लो, या फिर ये तीन फैक्ट्स प्रूव हो जाएं या दो प्रूव हो जाएं, एक प्रूव ना हो पाए, whatever be the case will be finally decided. So these facts, three facts, are called the primary facts or the main facts or fact in issue. But proving intention per se is not possible. So you have to take the surrounding circumstances. You have to look the conduct. You have to look the circumstances in which the accused behaved in that manner. Then only you will infer the intention. So those other facts from which you infer the intention. For example, on a day the accused threatened the victim that I will kill you. So it is a previous conduct, or there is a fight between the victim and the accused. So that fight will result into the causation of the motive. So that quarrel or the fight will result into the formation of the motive. So that is one fact. Then your previous conduct is another fact. Then you found on the spot, and when the police came, you found running from the spot. That is a subsequent conduct. Then the fingerprints found on the pistol, which is identify the experts. Then this expert's opinion is also the fact which will prove that it is your fingerprint. And finding of the fingerprints on the pistol from which the bullet was shot. That ballistic expert will prove that the bullet was shot from the same pistol that was recovered from the spot. And the fact that your fingerprints found on the pistol goes to identify the culprit, because the fingerprints which was found on the pistol. So these facts together go on to prove that the accused shot the victim. Then again it would see whether he shot on the vital part of the body. If yes, that will go on to prove that he is having the intention to cause death. So ये जो other relevant facts and circumstantial evidences हैं, they together go on to prove the main facts. That is fact in issue. So that is why we can say that fact is of two categories. One is fact in issue, main facts, and other one is relevant facts, secondary facts, or circumstantial evidences. And fact in issue is main fact, primary fact, or factum probandum or facta probandum. And secondary facts also called facta probantia. So these are the basic things you have to prove or disprove. A private defense था कि नहीं, the accused will prove that there is blood shot upon him first. And for that, the finding of the two cartridge around from the locality from the another gun in the direction in which this man accused was standing will go on to prove that the bullet was shot upon him first. Maybe their eyewitness was present who gave the witness that yes, the bullet was shot upon him first. Victim ने पहले bullet fire की थी upon the accused. So these facts you will prove will called
relevant facts. And these relevant facts is provided from section 6 till section 55. और इसकी लिस्ट हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं. So that is where the entire evidence act revolves. तो जो केंद्र बिंदु ध्रुव पिवोट है जो एविडेंस एक्ट का, एंटायर एविडेंस एक्ट का, is the main fact and the relevant facts. Actually, the pivot is the main fact, the fact in issue. In order to prove the main fact, it may be required to prove the several circumstantial evidences, which is also called the relevant facts. So this is the first thing. What will you prove? Fact in issue or the relevant fact? Now the second point is it essential to prove all the fact in issue और relevant facts? क्या सारे fact in issue और relevant facts का evidence देना जरूरी है? Or are there some facts which need not be proved? आपको ट्रायल में सारे relevant fact, सारे fact in issue प्रूव करने पड़ेंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी facts हैं जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि privileged communication that cannot be proved and that need not be proved. Then you talk about the judicially noticeable facts. Then you talk about the admitted facts. So these facts need not to be proved. मतलब इनके लिए आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है. अब हिंदुस्तान में गाड़ियां लेफ्ट की ओर चलाई जाएंगी कि राइट की ओर? अब सपोज देयर वाज एक्सीडेंट. अब एक्यूज्ड चला रहा था गाड़ी फ्रॉम द राइट साइड, राइट सीट पर बैठकर ड्राइविंग कर रहा था ऑफ द कार. Accused was driving on by sitting on the right side and killed by an accident. Now the trial is going on and the prosecution says that he is driving the vehicle deliberately from the wrong side. अब इंडिया में तो लेफ्ट या राइट किसी भी साइड ऑफ रोड से हम गाड़ी चला सकते हैं. अब उसी में मान लो क्वेश्चन अरोज होता है कि दैट द सीट ऑफ द ड्राइवर वाज ऑन लेफ्ट साइड. अब इंडिया में तो राइट साइड में होता है, स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक, क्लच एक्सेट्रा, until unless there is modification in the car or it is exported from the outside. So general presumption is that कि driver is on the right seat. So उसी प्रकार से उसमें कोई फैक्ट अरोज होता है कि that he is overtaken the vehicle from the wrong side. अब ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल तो है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट किधर से ओवरटेक करना. सो दीज आर द जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स कि ड्राइवर सीट तो इंडिया में राइट साइड पर रहती है और कार को हम राइट साइड में ड्राइव कर सकते हैं या लेफ्ट साइड में ड्राइव कर सकते हैं. अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल से कि सन राइजेज इन द ईस्ट. अब इसको हम प्रूव करेंगे या फिर सबको पता है? अब विंटर्स में काफ़ी फॉग हो जाता है दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में सुबह सुबह. सो उसको प्रूव करना पड़ेगा या सबको पता है? अब सिमिलरली कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल पर्टिकुलर ईयर में किस डेट को है उसको प्रूव करना पड़ेगा या इट इज नोन टू एवरीवन. सो इन दैट वेज देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच आर नोन ऑलरेडी एंड यू need not require evidences to prove that, because these facts are such facts which the court itself upon its judicial mind can look. So you do not require to give evidence on those facts. So ऐसे facts जिनको court itself can notice upon its applying its judicial mind itself can notice. So for that facts there is no requirement for giving the evidence, even if it is a fact in issue or relevant fact. If that fact is either of these: privileged communication, judicially noticeable or admitted facts. So the first point was, what do you prove in the evidence act? That is relevant fact and fact in issue. Then what are the facts which need not to be proved? So these are three what facts need not to be proved. First one is judicial noticeable facts. Second one is privileged communications. Then third one is facts admitted in pleadings. Facts which are admitted in pleadings. So these are the facts which you need not to be proved. Otherwise all other facts to be proved. अब next one is, पहला तो है कि क्या प्रूव करोगे आप एविडेंस में, एक्ट में,
और क्या प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर प्रूव करोगे तो कौन प्रूव करेगा, हु विल प्रूव। सो हियर कम्स द क्वेश्चन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ में भी अगेन द मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ एंड दूसरा हु हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ। द prosecution is having the burden of proving the offense. The defense is having the burden of proving the exceptions. Similarly, the plaintiff has the burden of proving the cause of action, and the defendant is having the burden of proving the non-existence of the cause of action. Who has the burden of proof? The burden of proof is not permanent. It keeps shifting. So that we have to understand in 101, 102, etc. 103 as to how the burden of proof shifts. So we have to talk about shift of the burden of proof. And once you understood this, it also talks about presumptions. And here we talk about the presumptions of facts. When one fact is presumed, when one fact is presumed, then the burden of proof shifts upon the other party. When we presume a fact in favor of the plaintiff, then the burden of disproving that fact will shift upon the opposite party. In presumptions, you will talk about the shall presume, may presume, and third one is conclusive proof. Shall presume, may presume, and conclusive proof. अब इनका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एविडेंस एक्ट में काफी जगह लिखा है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम मीन्स व्हाट, इफ सर्टेन फैक्ट्स आर देयर इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू रेज द presumption, and where it is written may presumed, then even if the facts are proved, then the court has the discretion to make the presumption or not to make the presumption. That is may presume. And the conclusive proof is if certain facts is proved. Conclusive proof is if certain facts is proved, then the court has to deemed that the fact is proved forever, and there cannot be any rebuttal for that. नॉर्मली क्या होता है सेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में अगर कोर्ट प्रिजम्पशन कर लेता है तो अपोजिट पार्टी को राइट होगा दैट अपोजिट पार्टी शैल डिस्प्रूव दैट फैक्ट। लेकिन अगर कंक्लूसिव प्रूफ हो गया तो अपोजिट पार्टी उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकती। दैट इज वंस एंड फॉर ऑल फाइनली प्रूव्ड। दैट इज व्हाट कॉल्ड कंक्लूसिव प्रूफ। अब कंक्लूसिव प्रूफ के लिए यू विल फाइंड 112 सेक्शन, 113 एंड 41। ये तीन सेक्शंस हैं विच आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूसिव प्रूफ। सो दिस इज द अदर थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द प्रिजम्पशंस। सो अब तक हमने देखा व्हाट विल यू प्रूव एंड व्हाट फैक्ट्स यू नीड नॉट टू प्रूव। दूसरा देखा फिर हु विल प्रूव, बर्डन ऑफ प्रूफ, then who has the burden of proof and how the burden of proof shifts, and what is the effect of presumptions, and there how the burden of proof acts in the case of shall presume, may presume and conclusive proof। अब उसके बाद how to prove। अब next issue is how to prove। what will you prove, who will prove, what, who, and now it is how। अब किसी एविडेंस को या तो आप डॉक्यूमेंट से प्रूव करोगे या फिर ओरल एविडेंस से प्रूव करोगे। तो किसी एविडेंस को या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करोगे या ओरल एविडेंस से प्रूव करेंगे। नाउ वन कार्डिनल प्रिंसिपल इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड द ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो बड़ा होगा किससे, ओरल एविडेंस से। मीन्स जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो एक्सक्लूड कर देगा ओरल एविडेंस को। दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 91 और वहीं पर हम डिस्कस करेंगे लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट। अब देयर आफ्टर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड
What is primary and secondary evidence? अब उसमें भी cardinal principle है that the primary evidence will exclude the secondary evidence. That is provided in the section 64 that the primary evidence will exclude the secondary evidence. अब उसके अलावा documentary evidence में एक attestation of the documentary evidence, public, private documents, etc. अब इसमें भी presumptions. There are two forms of documentary evidence, primary and secondary documentary evidence. Primary documentary evidence exclude the secondary documentary evidence, and in some cases primary documentary evidence is attested in some cases, and the value of that attestation and who can attest, etc. And then proof of attestation plus documentary evidence can be of two types. Public document it can be, or private document it can be. And there are certain sections which are talking about the presumptions of public and private documents. So all that will fall here. तो डॉक्यूमेंट्री में ये हो गया. डॉक्यूमेंट्री और ओरल में आपका documentary will exclude oral evidence. In documentary, primary and secondary evidence are there. Primary exclude the secondary, but there are cases where the secondary evidences are allowed. That is given under section 65 when secondary evidence will be allowed. Then some minor topics, that attestation of the documents, then presumptions related to public and private documents. So all these topics related to documents. Broadly section 61 to 90 will take dealing with it, but otherwise you are related to other topic, things related to other topic, that is oral evidence. How will you prove the oral evidence? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को तो आप डॉक्यूमेंट से प्रूव कर दोगे, या तो वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, लेकिन ओरल एविडेंस आप कैसे प्रूव करोगे? हाउ विल यू प्रूव द ओरल एविडेंस? हाउ विल यू प्रूव द ओरल एविडेंस? दैट इज ओरल टेस्टिमनी. Oral testimony can be proved by presenting the witness who has seen something happening or who has heard something. He will appear into the court and he will give the testimony. So the first thing that comes out is that it's a witness. Then from this the other question comes out is who can be a witness. So इसमें होता है competency of a witness. Who can be a witness means competency of a witness. Competency of witness. A witness should be a person who understands the questions asked to him and who is capable of answering the tangible, rational questions asked to him. Who is capable of giving answers, tangible, understandable answers. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने से पूछे गए प्रश्नों को समझने की क्षमता रखता है और उसके उत्तर दे सके, और ऐसे उत्तर जो कि समझ में आ सके, ऐसे उत्तर दे सके, जो ऐसे उत्तर देने की क्षमता रखता है. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है. तो कोई बच्चा भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है अगर वो सवाल समझने की क्षमता रखता है और ऐसे उत्तर जो दूसरे को समझ में आ सके देने की क्षमता रखता है, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है. एंड देन अगेन द क्वेश्चन इज, कैन अ विटनेस बी कंपेल्ड टू गिव अ टेस्टिमनी? कैन अ विटनेस बी कंपेल्ड टू गिव टेस्टिमनी? अब इसमें इस पॉइंट में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन फॉल करेगा. इसमें सेक्शन 132 पढ़ेंगे और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे. वहां पर यू विल अंडरस्टैंड कैन विटनेस बी कंपेल्ड टू गिव टेस्टिमनी और नॉट. और competency of witness is given in section 118, 190 and 120. अब ये दो चीजें, कौन विटनेस बन सकता है और क्या विटनेस को आप कंपेल कर सकते हो विटनेस देने के लिए, एविडेंस देने के लिए विटनेस को क्या कंपेल कर सकते हैं. आफ्टर डूइंग दिस टू थिंग्स देन ओरल टेस्टिमनी शुड बी डायरेक्ट एंड नॉट hearsay. Oral testimony has to be direct and not hearsay. Means if you have heard about someone, if you heard something from someone, then you cannot give the testimony. You can give the evidence only of that fact which you yourself have seen
or you have heard. Then the next is examination of a witness. अब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस में हम पढ़ेंगे, मेन चीज देख लेते हैं। एक लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि नहीं, विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल विटनेस से अगर आप पूछो दैट वेयर वर यू प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, सो इन दिस यू आर जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन, you are not suggesting any answer. If the answer came that I was standing 3 meters away from the accused, so that is a genuine answer he gave spontaneously. बट उसी क्वेश्चन को अगर आप ये पूछो, इस तरीके से पूछो, क्या आप accused से 3 मीटर दूरी पर खड़े थे, then are you not suggesting the answer also in this question? क्या तुमने उसी तरीके से और क्वेश्चन, क्या तुमने ब्लू शर्ट पहन रखा था या फिर आपने कोई रेड कलर की कैप पहन रखी थी, तो इसमें आप उसका जवाब भी साथ साथ बता रहे हो। अगर आप पूछते हो कि आपका शर्ट किस कलर का था, कैप किस कलर की थी, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो बाद में बताएगा उसका आंसर। लेकिन अगर आप पहले ही बोल दोगे कि आपकी इस कलर की थी शर्ट थी या कैप थी, तो इसमें तो आपने उसको आंसर बता दिया। तो आंसर इन द कोर्ट शुड बी स्पॉन्टेनियस, इट शुड कम आउट ऑफ द माइंड ऑफ द एक्यूज्ड। हालांकि लीडिंग क्वेश्चंस विल बी अलाउड, पढ़ेंगे हम, तो वी वुड सी दैट लीडिंग क्वेश्चंस विल बी अलाउड, देयर आर वेरी फ्यू रेस्ट्रिक्शंस अपॉन इट, but there are some cases where there is restrictions in asking leading questions. So you cannot ask questions in a manner in which you are suggesting also the answers to him, because you are tutoring the witness. Witness को आप अगर tutor कर रहे हो, आंसर बता रहे हो, how will the court trust the witness? Because he is not giving the answers from his own mind, and therefore the leading questions in general in certain cases will not be allowed. With the court permission it will be allowed. Then in this you will talk about the contradiction. The witness ने कोर्ट में खड़े होकर कहा, I saw A and B stabbing C, both of them having knife in their hand. Then the question came, what may be the size of the knife? Then he said it may be 10 centimeters. I do not remember exactly, but broadly it is 10 to 15 centimeters from the dagger side. अब suppose the same witness has earlier written a letter to someone. मान लो आपने किसी दोस्त को लेटर लिखा था या मैसेज किया था कि आज मैंने बहुत खतरनाक घटना देखी, and he talked about it to his friend in the letter or message, and there in that letter he has written that accused were running with the swords behind the victim. A और B C के पीछे तलवार लेकर दौड़ रहे थे और उसको तलवार से मारा, और कोर्ट में आज ये बोल रहा है कि उसने चाकू से मारा, ए और बी ने सी को चाकू से मारा। अब जैसे ही उसने कोर्ट में बोला कि देयर इज डैगर इन देयर हैंड, अब क्योंकि लेटर कोर्ट में है प्रोसिक्यूशन के पास या डिफेंस के पास, देन इमीडिएटली द डिफेंस विल पिक अप द लेटर एंड शो टू द विटनेस। विटनेस को वो लेटर दिखाएंगे, दैट डिड यू राइट दिस लेटर? Then if the witness say no, this is not my letter, then it would refer to the handwriting expert, etc., to prove that it was his letter. But if he said that yes, it is my letter, then they will underline or highlight that portion of that sentence of that letter and ask that do you write this? तो जैसे कहता है कि वो लेटर मैंने लिखा है, तो उसमें कोर्ट में आप उसको दिखाओगे कि लेटर में लिख रखा है कि दैट इट इज स्वॉर्ड, तलवार थी, एंड नाउ ही इज सेइंग डैगर, एंड ऑब्वियसली हिज टेस्टिमनी इज नॉट ट्रस्ट वर्दी। अगर वो कहता है कि मेरा नहीं है लेटर, तो आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वगैरह से प्रूव कराओगे दैट इट इज रिटन बाय हिम ओनली। सो दैट इज हाउ यू कॉन्ट्राडिक्ट विटनेस लेटर। So that is how you contradict the witness. So that is leading questions, then contradictions, and in that line only we will see the topic cross examination. अब क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारे सेक्शन है, 146 से 153 तक।
अब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कॉरोबरेशन। अब कॉरोबरेशन में मान लो वो लेटर वाला एग्जाम्पल था, उसमें भी मान लो तलवार की जगह चाकू ही लिख रखा था। कोर्ट में आके भी उसने स्टेटमेंट दिया कि दैट दे स्टेप्ड विद द नाइफ। अब जो प्रोसिक्यूशन है उस लेटर से उसको कॉरोबरेट कराएगा दैट द सेम थिंग वाज रिटन इन द लेटर अर्लियर आल्सो फॉर द सेम इंसिडेंट। सो विटनेस प्रोसिक्यूशन का है तो प्रोसिक्यूशन लेटर को प्रोड्यूस करेगा कोर्ट के सामने, जो आज इसने स्टेटमेंट दिया है वो पहले भी एक लेटर में लिख चुका है, and that was written spontaneously, so you can corroborate his statement with the letter by annexing the letter. अब सपोज मैंने आज कोई घटना देखी और आज मैंने कह दिया, उसके बाद कुछ कहा आज और कल में देखा है मैंने और स्पॉन्टेनियस कहा, तो स्पॉन्टेनियसली जो मैं कहूँगा सच ही कहूँगा। तो अगर कोर्ट में मैं बयान देने जाता हूँ साल डेढ़ साल बाद, क्योंकि ट्रायल तो तुरंत से चालू नहीं होगा, साल डेढ़ साल बाद जब मेरा सम्मन वगैरह आएगा मैं जाऊंगा बयान देने के लिए, तो वहाँ बयान देने जाता हूँ तो वहाँ मैं सेम बात को दोहराता हूँ। अब वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि क्या इसकी बात विश्वास करने योग्य है कि नहीं। तो उसमें अगर मैंने पहले कोई स्टेटमेंट किया था रिटन फॉर्म में, उसको अगर कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाए तो उससे ये कॉरोबरेट हो जाएगा कि जो ये आदमी कह रहा है वो सही है। अब अगर रिटन फॉर्म में है तो 157 में कॉरोबरेट होगा, और ऑरली अगर उसने कुछ कहा था 159 थर्ड क्लाउज में यू कैन प्रूव दैट स्टेटमेंट। हालांकि 159 क्लाउज 3 में, सॉरी 159 में तो आपका रिफ्रेशिंग मेमोरी है, 155 क्लाउज 3 में कॉन्ट्राडिक्शन है। सो ऑरल फॉर्म में कॉन्ट्राडिक्शन है 155 क्लाउज 3 में, बट कॉरोबरेशन यू कैन प्रोड्यूस दैट into the court. So this is what called corroboration. So leading question, contradiction, cross examination and corroboration. Now you see, suppose I call a witness, it is testimony on my part. I call a witness on testimony on my part for me on my behalf, and in the court the witness came on behalf of me but he refuses to answer into the court. Means what? My witness is not supporting me. Earlier he has promised to support me, but now in court he turns around. Means the witness became hostile. अब मेरा ही witness मेरे खिलाफ हो गया है. It means he became hostile. अब मेरा witness मेरे खिलाफ हो गया, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो जो बयान वो मेरे खिलाफ दे रहा है वो मेरे खिलाफ यूज हो जाएगा, और या फिर वो someday he will become the witness of the opposite party. तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, उस विटनेस की क्रेडिट को इम्पीच करूंगा। इम्पीच मतलब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये विटनेस विश्वास योग्य नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं अपने ही विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा। अगर मैं ये कहता हूं देन इट इज ए रॉन्ग सेंटेंस, तो मैं अपने विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, बट आई कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम माई विटनेस which is of the nature of cross examination with the permission of the court obviously, and by asking the questions, therefore by that I impeach the credit of the witness. I will prove that witness as untrustworthy, क्योंकि एक बार अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि वो अनट्रस्टवर्दी है तो वो दूसरी पार्टी की तरफ से भी विटनेस बनकर कोर्ट में नहीं आ सकता। So that is what hostile witness section 154. अब then you see कि मैं किसी केस में विटनेस हूँ, मैंने कोई इंसिडेंट होते हुए देखा, तब मैंने कोई इंसिडेंट वो लिखवाया था, लिखा था, या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, मैंने पूरा स्टेटमेंट उसमें लिखा था। अब क्योंकि एवरी पर्सन इज एंगेज्ड विद बिजी शेड्यूल, हर अपने काम में लगा हुआ रहता है, तो आज उसने कोई घटना देखी है तो एग्जैक्टली वो चीज उसको याद नहीं रहती आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो जो 10-5 दिन बाद ही याद नहीं रहती बहुत सी चीजें, तो वो 2 साल 4 साल बाद जब अभी कभी विटनेस का नंबर आएगा तो वो सारे डिटेल्स याद नहीं रख पाता। तो उसमें कुछ मेन चीजें याद भी रहे उसको, तो एक एक डिटेल्स याद नहीं रहती जो कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट उसको याद थी।
तो उसी बात को अगर किसी ने लिख लिया है या रिकॉर्ड करवा लिया स्टेटमेंट और उसको अगर पढ़ लेते हैं बाद में तो उसको याद आ जाएगा। सो कोर्ट में जब क्वेश्चन अरोज होगा कि कैसे क्या इंसिडेंट हुआ था, आपने क्या देखा था, तो इतना रिमेम्बर नहीं रहेगा until unless he refreshes his memory by the thing what he has written। सो इस वजह से कोई विटनेस आता है कोर्ट में तो उसकी जो स्टेटमेंट्स अर्लियर रहते हैं, whether it is given to the police ऑफिसर्स और समवेयर, तो उनको रिफ्रेश किया जाता है, उनके स्टेटमेंट्स को दिखाकर उसको रिफ्रेश मेमोरी किया जाता है। अगर स्पॉन्टेनियसली कोई डायरेक्टली आ जाता है और उसको याद नहीं है तो उसके स्टेटमेंट्स उसको शो कर कर मे बी आफ्टर 2 days और 3 days उसको दोबारा बुलाकर फिर उसके स्टेटमेंट कराए जाते हैं। सो दैट इज द रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी ऑन द प्रीवियसली रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद what we have to see is in the beginning itself is examination in chief, meaning of the examination in chief, cross examination and re-examination। अब relevant facts पे अगर बात करें तो relevant facts पे तो बहुत सारी चीजें हैं। broadly the admissions and confessions, then dine declaration, previous judgment, then experts evidence, character evidence, conduct, preparation, facts which establish relationships, any fact which establish the status of mind, alibi, last seen together, DNA testing, same transaction, conspiracy, usage and customs, damages, course of event, course of business। कोर्स ऑफ इवेंट्स मतलब जैसे कोई ऑफिस जाता है तो डेली पर्टिकुलर टाइम पर जगेगा, उसके बाद फ्रेश होगा, उसके बाद कपड़े वपड़े पहनेगा, देन अपने बस ट्रेन या गाड़ी जो भी है जिस रूट से वो जाता होगा रेगुलरली, सो उसके बाद वो ऑफिस पहुंचेगा। देन आफ्टर दिस पीरियड टू दिस पीरियड वो ऑफिस में रहेगा, इस टाइम पर लंच होगा। तो अगर रूटीन है किसी का और उस रूटीन में कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ है तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट सारे इवेंट हुए होंगे। जिस प्रकार से हम पोस्ट ऑफिस में लेटर्स डालते हैं तो लेटर डालेंगे तो उसके बाद सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद पर्टिकुलर ऑफिस में जाएगा, फिर उधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अल्टीमेटली दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पर्टिकुलर एड्रेस। सो सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट दैट। अब इन सब से 13 हो 16 हो उनका एक क्लाउज 32 से जुड़ा हुआ होगा, तो उनके साथ 32 के क्लाउजेस समझते जाएंगे और फिर उसमें 32 क्लाउज 1 बचेगा, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन, उसको हम देखेंगे लास्ट में। सो ओवरऑल फिर हम देखेंगे सेक्शन 6 to 55 रेलिवेंट फैक्ट्स वगैरह से रिलेटेड सारे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। वी वुड कंटिन्यू with the topic classification of facts in the next lecture. Thank you for watching.